हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है ये हैंडल टी फोर्क के ऊपर रिव्यू लेने वाले हैं। ये है एच एफ डिलक्स BS6 मॉडल है। ये लेके करीब 2 साल हो चुकी है। तो इसका रीजन है हैंडल अटक जा रहा। देखिए बीच में छोड़ दिए हैं वहीं अटक जा रहा, और भीड़ भाड़ जगह में चलाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा। तो फ्री बैलेंस ही नहीं हो रहा, और लॉक एडजस्ट करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा। अगर इसको ढीला कर देते हैं तो उबड़ खाबड़ जगह में घट घट की आवाज़ आ रही है। तो इसको चलिए इसको खोल के बेकार बदले ही इसको ही ठीक कर देते हैं। ये जाली वाली रेसर आती है, तो इस जाली को खोल के 2 गोली बढ़ा देते हैं, तो इसमें टोटल 8 गोली आते हैं। तो इसी को ही ठीक कर देंगे। चलिए रख देना है ताकि टांकी में स्क्रैच ना पड़े। देखिए दोस्तों, ये जाली वाली रेसर आ गई है, और ये प्लास्टिक जाली को फेंक देंगे, सिर्फ गोली ही डालेंगे। हम अभी सरा गोली लगा दिए हैं, टोटल ऊपर नीचे 8 लगा दिए हैं गोली। अभी टी को लगाने वाले हैं। देखिए इसी तरह बहुत फ्री लग गया, अभी पानी जैसा, अभी मक्खन जैसा लग रहा। देखिए, और ढीला भी नहीं, पूरा एक्यूरेट परमानेंट हो चुका है। देखिए हवा चलाने के बाद ही पता चलेगा। प्लेट अभी परफेक्ट बैठ चुकी है, और इसके बाद नाट
बस अभी हल्का ही छोड़ देते हैं, शॉकर लगाने के बाद फुल एडजस्ट कर लेंगे। हाँ अभी शॉकर लगाने वाले हैं। आगे आगे इसको नहीं बांधे। हाँ अभी सारा कुछ टाइट करके कंप्लीट कर दिए हैं। अभी टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं। रोड से नीचे उतर चुके हैं। अभी ऊबड़ खाबड़ जगह में रनिंग कर रहे हैं। अभी देखिए बहुत मक्खन तरीके से अभी जा रही है गाड़ी, कोई आवाज़ नहीं और सुधा कोई आवाज़ नहीं। घाट घाट की आवाज़ एकदम बिल्कुल गायब हो चुका है। देखिए अभी स्पीड में भी हूँ।
फ्री में ऊपर खबर जगह में अभी रनिंग कर रहे हैं। देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से अभी काम किया है फॉर्क। हाँ देखिए दोस्तों, इसी तरह सरदार ऑटो टेक्नीशियन काम करता है। कस्टमर का जेब बचाने को हमेशा चाहता है। ये कम से कम खर्च में हमेशा गाड़ी बनाने को चाहता है। तो इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए यारों। हरि खालसा वाहिगुरू की फतेह।